in our community. And taking one was here, was still name, and good thing, you are from. Yeah, but my, and I said, she got my number. And the name of that, I mean, a bit of and you will also come and sit there. Shivam Mama completed. I don't need to say the place when it's class. Yesterday, I don't need to explain it. But it was not so much. Earlier, I gave the same thing I have repeated yesterday also. But my daily if you are doing, it won't make it daily function. God, so daily. And fast. Okay. And Yes, ma'am. good morning. Yes, ma'am. Good morning, yes. Just on the video. Ma'am, the internet is low. Yes. Let's see what is global world, making of the global world. Right? See, imagine if I want to buy a big Apple iPad. So, Apple iPad is not the possibility of money else. I had it. But what is more, yes, other layers, that's not. And they are once again present now. Abaya. Okay. See, you want to buy, you want to buy an apple. iPhone. So what you will do, which place you will go to get it? India. India is which place? And Apple shop. The store place. Nearby any store, I think it is available. But Apple shop. Okay, where is Apple store here? Second. Okay. Wherever it is there, you can either choose your nearby any PGC or whatever electronic shop also you will get it. And what he told is that more discounts are available. Why is it possible? Okay. So
it is available in our local market. This is what I want to say. So we know we are not in need of going to America to get it. We are getting the things in our nearby market. This is what making the whole world into a global market, international market. Everything, whatever we need, and use it. No, Shivam, I think you have to come here today. No, no, I don't think okay because madam is telling each and every money boy in the class. So, what is the condition? It is available in our nearby local market. The condition is made in such a way that we are feeling that we are in America. Yes, if we want to purchase the books which are manufactured. But actually, it is not produced in America. Do you know how it is produced? Huh? America, that is America is the manufacturer which that Apple iPhone is produced in America. That is what we know because it is an American company. But actual production is not taking place in America. America is that American company, Apple company is giving order to China. So we are having a kind of smart livelihood Chinese product is not good product. Maybe like that. But this Apple iPhone is also manufactured in China. How America gives order to China and China manufactured it. Then in India, so many BPOs are. BPOs, you are going business processing organization. That is, they have to canvas the order. Okay. वो अपन iPhone का ऑर्डर कैनवास करने का काम कौन करता है इंडिया का यूज करता है तो वो लोग पूरा वर्ल्ड दुनिया के लिए कैनवास के करता है मॉडर्न कैनवास तो चाइना में ये प्रोड्यूस होके इधर जाता है मेक्सिको जाता है ईस्ट यूरोप में जाता है उधर से जिधर जिधर चाहिए ऑर्डर मिला उधर जाता है तो हमको मिल सकता है so literally America is not seeing that according to the orders how it is produced so almost all the parts of the world are involved in that but so this way when products are used in diverse locations and it is purchased also in diverse location. This process is called the globalization. Literally a global world. And this is not a new phenomenon. Earlier times onwards, this was the Indus Valley civilization. Have you heard about Indus Valley civilization? 5,000 years ago. Harappa. So that time onwards, this trade contacts was there. People from the east used to go to the west and other parts of the world. They sell products and buy the products which they are not having. That time, they were not having currencies. So they used to use cowries. What is cowries? Seashell. A kind of seashell was used as currency. The earlier time. So that time onwards, time immemorial onwards, trade between these parts were taking place. But there are some changes. It's not like that how the earlier trade was there. That we know. Now, modern day, the trade was very, very fast.
because of the means of transport and communication. Imagine a person in Delhi Ames Hospital is patient is serious. He needed some medical emergency. This time, the thing which is needed is not available in India. Now, what can be done? It can be got from the countries which are available. Admitted. Admire. Yes, ma'am. Now connectivity is the rail between I called you two times. Yes, ma'am. I Audible. heard, but I could not. Yes, ma'am. Okay. It was not audible. Okay. Aldi, Yes, ma'am. Ma'am, I'll switch on my video in 2 minutes. okay. It is not visible. It is switch on means it is not visible. Okay. Yes. So what we were discussing that the patient need and medical emergency. In that time, what to be done? The thing had to be brought from abroad. It's available in America. So how it can be possible that from this hospital, AIMS, they called to that American hospital and requested to send it. So immediately by air, it can be reached to Delhi. In other times, it was not possible. And even that money also, whatever is there, that also transfer, money transfer also can be done. So all these processes are possible because of globalization. Earlier time, what we used to do, we were not like that then. Some of the grandparents and all, they have to walk miles and miles to get the things. That time also money was not available. So what they used to do? Barter system. Or some kind of coins were there, Anna, and some kind of coins were there according to that. So all those times also we were having that financially. But modern day it transformed. Changes are taken. So what was the medium of exchange at that time? Cowrie after reform. Cowrie means a species. Got it? Don't forget it. One mark question. Now, after that, there was a change. There was a road which used to transport the goods from east to west that was known as Silk Road. Okay? East to west connectivity. Mostly it was land road. That is from China to other parts of the world. That was the beginning. The main item for trade was silk. So that is why the route came to be known as silk route. Understood? The main component of trade was silk. So it moved from China to other parts of the world. And afterwards, from India also they collected so many things and they used moved to the west. From the west, what was coming? From the west, they used to get gold and silver in different forms.
He was gone and he came to India. It was not the original home. It is not the original. So it was also introduced through that route. So like that way, there was so many silk routes, not one. So many silk routes. So many ideas moved from east to west. Porcelain was there. Then so many spices, cotton, and all also moved from this to western items. From the west, so many other items. Afterwards, okay, silk or goods were moved. So I'm just writing goods moved. And along with that, the next movement was ideas. When we go to some other part, the ideas of house also move to others. The Indian ideas, Indian culture, and they are coming to us with their culture, their ideas are also coming to our land. Then, along with that, we know that missionaries also came to India. Who were the missionaries? Have you heard about The the Christian missionaries? schools. Ah, the missionaries who propagate the religion. Okay. Ancient time, you might have studied about Ashoka. He spread Buddhism to other parts of the world. So his sister, his relatives were sent to Nepal, and through Nepal, they were sent to China, Korea, Japan, and all. So more than our that is Buddhist, other countries are having this. We have studied Sri Lanka. Sri Lanka's main religion is Buddhism. How? Is it originated in Sri Lanka? No. So, like that way, missionaries started spreading the religion to other parts. Then, along with the missionaries, there were conquerors also. Some places they conquered and occupied. So, we have seen goods, ideas, then missionaries, and then conquerors. Along with that, there was a period in which capital was also. Capital means what is capital? Value. No, capital means money which is required for investment. In economic terms, you have heard about it. So this capital also moved from one country to other country. So this way, if in the ancient time, many things moved between the continents. That time the movements were very slow, still the things and the ideas moved from one part to another. You know that in geography, last year geography, first lesson you have studied Panchtantra stories and all. Like that, from Arabia, some of the stories reached India. The stories. Have you heard about the Arabian Nights? No? Laila Majnun, love stories. Suna, it's enough. You should. Okay. So, question for Aladdin and 40 days. So all these type of stories also. We Abebi Ham Sunta hai. Kulta. What is that? So these all things like story may also reach from one part to other. We in your smaller classes, you might have heard about the fairy tales of Alice in Wonderland. These are the fairy tales which prevail in some particular region.
and it spread to other parts. So this movement of people from one part to another. Then you might have studied or read about the river in Lilliput. So the river travels different. These kind of stories from the ancient times onwards move from different parts, one part to other. Then, point by point. Okay, so even though they are stories, they give some ideas to the people. So, ancient times Silk Road was like that, okay? It helped in spreading ideas, then customs and practices, then goods exchange, then later on conquest. Okay. Now, along with that, there was a period of food travel. अभी आप लोग घर पे बैठ के अभी भूख लगी है घर पे बैठ के जोमैटो पे ऑर्डर कितने लोग ऑर्डर करते हैं ऑर्डर करते हैं हाँ शिवा ऑर्डर करते हैं क्या ऑर्डर करते हैं जो मन करते हैं you try to rest okay okay try to rest okay so what is it ready to eat simple yeah it was when you first come to your home the mother used to toil for a long time to cook food. I think yesterday I have told you about it. So this kind of condition completely changed. Food also began to travel. How was this food travel? You only told this Maggie you don't like, no? Yes. Yes. Nobody likes it. You like it. That's it. You don't like it. Okay. Huh? You shouldn't do it. Everyone, like one form or other, there is Maggie. It's an instant. That if mother is not there, also one child cannot say, that's it. This Maggie also traveled like that. It moved from east to west and come back in the form of spaghetti. Have you tried spaghetti? Yes. So from the first when it came back, it got the name spaghetti. But from where it actually originated, we don't know. No, it is originated from the east and then moved. You know about our humble vada pav. But from the west when it comes, it is in the form of burger. Humble vada pav with the transformation come on it. This way, food also got a lot of the transformations and moved from place to place and get new names. And so many food crops also moved from Latin America to other parts of the world. It reached Europe and from Europe to India. Like that, potato is also one such crop. Potato, chilies. So, like that, a few crops are there. It was not originally from India. It moved from Latin America to India. And this humble potato made a difference between life and death. In Ireland, the place famine. At the same time, there was a disease.
for this crop also. This only famine time also they take deep into the soil in search of potatoes. And afterwards, when this crop was affected by disease, and it's like it made a difference between life and death. For survival purpose, they could live with this potatoes. If you are seeing, North Indians cannot survive without it. You make your parents speak any food. For the South Indians, they are rarely using. Now, they don't think that this is produced. Potato is produced in North India. South India is not producing because of that. South Indians are not having that much affection towards this. Hardly half kg if they are purchasing it myself. So 1 month also I can survive. Of course. So okay, whatever is that, this connect the people. Whatever is there, food connects the people of different regions. One example, there are certain crops which are producing in one part of the country and it reaches to other part. Coffee. Coffee, the main producer, Kerala and Karnataka. These are the two states where coffee is produced. But the whole country, coffee, many people are using. So from there it is reaching to others. Tea, that is Assam, Darjeeling, and Kerala. So these states are distributing this to other parts. So like that, exchanging goods which they are having sufficient or surplus, and the deficient regions are purchasing it. The same is the example of rubber. Rubber is required for everything. Tires, the basic necessity is what is that? Rubber. And rubber is grown in Kerala and Karnataka. The whole country is in need of that. So these exchanges are also taking place. But Kerala is not having so many things. Many things Kerala is not having, no mineral resources. Only monocyte sands, that thorium is there. But that thorium, nothing can be. But coal, if we want to produce electricity with the help of coal, we have to purchase coal from other states and then produce. So this way, there is an interrelationship or interconnectedness within the country as well as outside the country. This interconnectedness is called a globalization. Now we have seen that how food travel. And the next is that you conquest. When these people move from one part to another, their interest began to change. They find new things and vast land. They feel that okay, we will conquer and occupy it. So many places of Africa, Latin America, and many parts of Asia were conquered and occupied by Europeans because of the superior might that is machine power. So they conquered and occupied. But
conquest were not because of their superior arm power. It was through diseases. How diseases can conquer the places. Can you tell? Anybody? Hmm? That is bombing. I am asking about how diseases can conquer the place. Corona, when it is spread, it did not conquer and occupy the place. No, it decrease the population, it kill the population, disseminate the population. So no country came to conquer. See, the Spaniards means the people of Spain. They occupied America through this disease only. Spaniards were immune to diseases because they were having facilities and care and all. So they carry on their body the disease bearing germs of smallpox. Have you heard about the smallpox? It is not a chicken pox which you are. Smallpox is like a bigger size and it will kill the baby. Okay. Now vaccination is available and when you are born, that is in a few months, that vaccination is taken. So because of that, now completely eradicated. All over the world, the smallpox is eradicated. Earlier times, it was not. So that time, the Spanish conquerors, when they entered in America, they were having these germs on their body. And easily it got to the people of America, original inhabitants. After getting that, it is spread to others within no time. It's airborne disease. So all those people perished because they were not immune to it. Because they were living in forest land. The other people, Spaniards, have immunity. So they could carry or they were having this disease. Nowadays, chicken pox. So the doctors will advise you to take a rest. Not to go. Isn't it? You are not allowed to go to school. Even though exams are there, exams will be permitted afterwards. If it is board exam, okay, certain condition is there, you are allowed to sit in a separate room. Facility. Otherwise, 1 year will be lost. So that is why if you with the medical certificate, you can get some separate seat with the medical. Let's say some water is required, something else, help. Everything is given by the CBSE. So one special room will be. You can write, sit, write comfortably and you can. But the other school exams, that is up to 9th standard, the school will take your exam afterwards. So why it is also a contagious disease. And by taking a rest, it will go. And now some kind of vaccination is also available. Then what happened after that? But it is spreading. That is through air, but it is also spreading. So precautions are taken in the present. But olden days, all things were not. So all the population of American continent, that especially that North America, perished. Original inhabitants perished. And easily Spaniards could occupy that. That is why it is said that
It is not through any weapons they conquered. It was through what is that? The disease bearing germs they carry on the body. So it is called biological warfare. Okay, biological warfare means that it is a germ which destroyed the whole population and it was very easy for them to conquer. Clear? Then the people made a lot of travels to find out more routes. There were some stories about the fabled city of God. That is what El Dorado. Have you heard about El Dorado? That is fabled city of God. It's not real, but in search of finding that golden city, the people made excavations. This all things happened during that age. And afterwards, there was a large scale migration of people from Europe to America. Why? There was the religious persecution, there was poverty, and in search of them. So these three reasons, large scale migration from European continent to America. Actually, this one today you have to study. So you just take that lesson. Making of the global world. Yes, now we write the page number 1790, your volume. Volume is the textbook. Nothing brought up. Volume is the huh? Oh, that is where is yours? Yesterday I told you, and finally we have seen also. Making of the global world. So I told that there is one class only required today. This is what we page number 79. Definition. You just take your book and write it there. Definition. Worldwide interconnectedness through trade and travel. And whatever points I am telling, you just mark it and afterwards you write it here. You don't have anything. Mark it and that is one goes you just one what's the notion? That's 2% definition. Worldwide interconnectedness through trade and travels. Then, third, the making of the global world has a long history of trade, of migration, of people in search of work, the movement of capital and okay. Then, all through history, human societies have become steadily more interlinked. From ancient times, travelers, traders, priests, and pilgrims travel vast distances for knowledge, opportunity, and spiritual fulfillment, or to escape persecution, harassment, torture, religious. They carried goods, money, values, skills, ideas, inventions, and even germs and diseases. Then, next, for more than a millennia, cowries in Hindi cowrie or seashells used as a form of currency. From Maldives found their way to China and East Africa. So, actually, cowrie millennium is 100 years.
The long distance spread of business carrying terms may be traced transfer back as the 7th. Now next part is Silk Route. The question is that Silk Route was very important with regard to the movement of goods and ideas. Question itself is there and answer is there. The Silk Routes are a good example of vibrant free modern trade and cultural links between distant parts of the world. So all those. Okay. But important points. Okay. First point. Okay. The second, the name Silk Route points to the importance of Muslim Chinese silk cargoes along this route. Then they are known to have existed since before the Christian era and thrived almost until the 15th century. Chinese pottery also traveled the same route as did textiles, spices from India and Southeast Asia. In return, precious metals, gold and silver brought from Europe to Asia. Trade and cultural exchange always went hand in hand. Then, Christian missionaries almost certainly traveled this route. So you can make that one. Christian missionaries, Muslim preachers, then Buddhism also travel to this route. So you can mention that. Now you just connect all this. Christian missionaries, Muslim preachers, and Buddhism travel through this road. Got it? Next, food travels. Food offers many examples of long distance cultural exchange. Traders and travelers introduce new crops to the land they travel. Even ready foodstuff in different parts of the world might share common origins. Example, noodles. It is believed that noodles travel rivers from China to become spaghetti. Or Arabs traders took pasta to 5th century Sicily. Okay, so actually we think that the pasta is an Italian product. But from Arabia, it had gone to Sicily and then returned in the modern form. Okay. Then, many of our common foods, such as potatoes, soya, groundnuts, maize, tomatoes, chilies, sweet potatoes, and so on, were not known to our ancestors until about 5 centuries. These foods were only introduced in Europe and Asia after Christopher Columbus accidentally discovered the vast continents that would later become known as Americas. Then, sometimes new crops, you can get a question like this. New crops can make a difference between life and death. Explain. Europe's poor began to eat better and live longer with the introduction of humble potato. Ireland's poorest peasants became so dependent on potatoes, and when disease destroyed the potato crop in the mid 1840s, hundreds of thousands died of starvation. Okay. No, that 5 month food travel that up to that earlier point, that is 5 centuries ago. The 5 points are. But this products also you have which food crops are introduced. Sometimes you will get into market question, that is which are the food crops introduced. So you have. Okay. Now, the food make the difference between life and death. That is 2 lines are given. Highlights people how they are dependent on potatoes. Then conquest, disease and trade.
In pre-modern world shrank greatly. Sorry, the pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found a sea route to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. Then, Indian Ocean had not a bustling trade with goods, people, knowledge, customs, etc. crisscrossing its waters. Okay. Before its discovery, America had been cut off from regular contact with the rest of the world for millions of years. But from the 16th century, its vast lands and abundant crops and minerals began to transform trade and lifestyle everywhere. Precious metals, particularly silver from mines located in present-day Peru and Mexico, also enhanced Europe's wealth and financed the trade. Then, legends spread in the 17th century Europe about South America's fabled wealth, El Dorado, the fabled city of gold. Have you seen? Then, the disease that you can mark from smallpox in particular proved a deadly killer once introduced it spread deep into the continent and had even any European race war the discovery about the point other countries. Which one? Before it discovery of confession. This is the father. Before it discovery उसके बाद तो बहुत कोई I don't know, I read out. And last two points to be connected together, fabled well, no? So here the fabled city of gold. So last two sentences. Now you get now you have to. Smallpox in particular proved a deadly killer once introduced it spread deep into the continent. Page 81. We had even any Europeans reaching there. It killed and decimated the whole communities, paving the way for conquest. Guns could be bought or captured and turned against the invaders, but not disease such as smallpox. To this, the conquerors were mostly immune. Until 19th century, poverty and hunger were common in Europe. Cities were crowded and deadly diseases were widespread. Religious conflicts were common and religious dissenters were persecuted. Dissenter means the one who fight and have dispute with the religious authorities. Those who are disputing with the religious authorities were considered as dissenters and they were persecuted. And they could not live in that land. So they had to leave Europe and go to other countries. Okay. Then, thousand therefore fled Europe to America. Here, by 18th century, plantations worked by slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European markets. And well, into the 18th century, China and India were among the world's richest countries. They were also preeminent in Asian trade. Then, China's reduced role and rising importance of the Americas gradually moved the center of world trade westward. Europe now emerged as the center of the world. Okay. Two questions can come. So you underline it and they keep it. But one question is that why there was a large scale migration. The second part. Until the 19th century, have you seen? Guns No, guns पहले question है small dogs open here. So until the have you seen? Then Europe now emerged
was a center of world trade. That much is another why there was last year like you have to write it, but 4 or 5 points you have to remember. And second, you have to understand. See that the 1.330 you have to study the whole chapter. So better you learn everything. Yeah. So up to that much, it's any question can be asked. So if you are studying thoroughly, then it will be easy. Okay. Avanti and Anaya. Yes, ma'am. That lesson you have to study up to 1.3. Where I have stopped, that much only you have to study. Board exam के लिए. बाकी तो पढ़ने का ही नहीं. Okay. So you have to study up to that much, whatever is there. 4 or 5 types of questions are there. So that all I have told. So you study thoroughly. So any question, sure one question will come from this chapter. Either 3-mark question or that 2-mark question, 5-mark, it may not come because from the whole history, 5-mark question is coming. Mostly it can be from print culture or the first lesson. Got it? So better you study thoroughly that much. And question answer from the death. So Anmaya is not having volume with you, no? No, ma'am, I am having. You are having, you marked, no? The points. Yes, ma'am. Avanti is having. So you write it and learn it. The question that is first point up to this point, that is guns. No, up to that point, guns could be bought and conquered and turned against the invaders, but not dismissed as just one house to which the conquerors were mostly. That is the first. Now, this one, until onwards, why there was a large scale migration from Europe. If you write down these last points, yes. Stupid. Before India is not coming from God. Understood? Industrialization is only for school. India, there is 10 mark law with that. We are also teaching. I think the next week will be no, industrialization first we have to complete it. It will take some time. Number it is coming for periodic test. Because schools very important. Board it is not, but periodic test is coming. Understood. So we are not removing that. So next and afterwards we'll come back to vertical science. Yes, now half an hour is there, so you can see something related to that. This work you have tomorrow.
Saturday. So you have to learn it. And I want it to is Monday you are coming for other subject, no? Yes. You have to write in your book and write this. I will tell you those things. Okay. Why are you laughing? You just making of the global world and the person. एक घंटे का देखिएगा बस 28 मिनट मैम ये तो मैम पढ़ा रही एनिमेशन चाहिए अरे एनिमेशन चाहिए वाला लगाने की बात ये तो बेटर से क्या ये वाला नीचे ये नहीं हाँ वो लगा ये राइज ऑफ नेशनलिज्म भाई देख के पहले वाले ये you heard this ये नीचे नीचे वो वाला ये घंटे का है एक घंटे का वो वाला वो वाला ये भी एक घंटे का 50 नीचे मांगते हैं definitely. We will stop because that lesson, see, full lesson we don't have to learn, no? How much we have to learn that? Screen is not visible. Okay, thank you. के साथ काफी ज्यादा कनेक्टेड है ट्रेड्स के थ्रू आइडियाज के थ्रू बिजनेस के थ्रू बेसिकली बहुत सारी चीजें इंपोर्ट हो रही हैं एक्सपोर्ट हो देख रहे हैं वो कुछ और पढ़ा था मैं वो तो ये तो पता कर लेते हैं पर हम उसके हेटर है मैम नहीं पसंद नो मैम वो बोलते हैं वॉर खत्म हो गई है सब ऊपर वाला लगा मोदी ने मैं यार ये सोचता हूँ कि आजकल जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है ना जिसे तुम कहने को तो कह सकते हो कि ये हमें जोड़ता है आपस में दुनिया के किसी कोने में कुछ भी हो रहा होता है हमें तुरंत पता चल जाता है और शायद इसीलिए हम इसे ग्लोबल वर्ल्ड भी कहते हैं बट क्या हमेशा से ये ऐसा ही था और अगर नहीं था तो कैसा था क्योंकि कभी कभी मैं ऐसा फील करता हूँ इतना भीड़ भाड़ वाला दुनिया है 7.9 बिलियन लोग रहते हैं यहाँ फिर भी क्यों मैं अकेला फील करता हूँ एंड आई एम डैम श्योर कभी ना कभी तुमने भी ऐसा फील किया होगा तो अगर तुम भी ऐसा फील करते हो तो आओ ढूंढते इस सवाल का जवाब कि ये दुनिया बना कैसे जिसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर 3 मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड मॉडर्न वर्ल्ड कैसे बना ये जानने के लिए तुम्हें जानना पड़ेगा कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसे बना भाई तो ये बताने का कष्ट करेगा ये प्री मॉडर्न वर्ल्ड होता क्या है बताता हूँ भैया प्री मॉडर्न वर्ल्ड यानी कि मॉडर्न वर्ल्ड से जो पहले का समय था दैट्स कॉल्ड प्री मॉडर्न वर्ल्ड देखो मॉडर्न वर्ल्ड का स्टार्ट होता है इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के पहले जो भी चीज हुआ जो भी इवेंट्स हुआ दैट्स कॉल्ड प्री मॉडर्न वर्ल्ड तो प्री मॉडर्न वर्ल्ड कैसा था मतलब मेरे लाइफ के जैसे बेकार
आई थिंक तुम्हें ये पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन वर्ल्ड का ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में से एक है और इस चीज को तुम्हें बहुत ही प्राउड फील करना चाहिए। सो वहां हमें देखने मिलता है जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो ट्रैवल करते थे, ट्रेड करते थे वेस्ट एशिया के साथ। अभी तुम्हें ये चीज अच्छी तरीके से पता है कि आज का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इंटरकनेक्टेड है। तुम एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हो, बट ऐसा नहीं था कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड में लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल ही नहीं करते थे बट हाँ थोड़ा कम होता था। और इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है सिल्क रूट, एक ऐसा रास्ता जो जोड़ता था एशिया को यूरोप और अफ्रीका से, चाहे वो जमीन से हो या सी रूट से। मेनली इस रास्ते का इस्तेमाल किया जाता था चाइनीज सिल्क को यूरोप तक पहुंचाने के लिए और शायद इसीलिए इस रास्ते का नाम भी पड़ा सिल्क रूट। बट ऐसा नहीं था कि यहाँ बस सिल्क का ही ट्रेड होता था, कई सारे और चीजें भी जाते थे यूरोप, जैसे कि चाइनीज पोट्रीज और स्पाइसेस और टेक्सटाइल इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया से जाता था यूरोप पे, और इसके बदले में यूरोप से एशिया पे आता था गोल्ड एंड सिल्वर। इसके साथ साथ देखो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो अपने साथ अपने कल्चर को भी लेके जाते हैं। तुम्हें पता है तो क्रिश्चियन एंड मुस्लिम स्कॉलर्स एशिया में आए और बुद्धिज्म जिसका शुरुआत इंडिया में हुआ था वो भी दुनिया भर में फैलता है थ्रू दिस सिल्क रूट। अब अगला टॉपिक है फूड ट्रैवल्स। हाँ प्री मॉडर्न वर्ल्ड में ना फूड चलता था, दौड़ता था, भागता था, क्योंकि उसके पास हाथ पैर था। आई guess। नहीं बता, ठीक है। देखो जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, चाहे वो मैगी वेज आटा के भारे पसेटी आटा की गुडनेस में मिल गए हैं रंग बिरंगी सब्जियां और 20 मसालों का awesome taste। अब मैगी वेज आटा की बड़ी पैक के साथ पाएंगे exciting offers। All essential multivitamins just with one easy cup. चाहे वो ट्रेडर हो या ट्रैवलर्स, तो अपने साथ नए नए फूड क्रॉप्स को जहां वो जाते थे वहां लेके जाते थे। तो दैट्स हाउ फूड ट्रैवल। ओके, हाथ पैर नहीं होता था। अब इसके एग्जांपल कई सारे हैं, जैसे जब चाइनीज लोग ना यूरोप जाते थे ट्रेड करने के लिए तो अपना नूडल्स लेके जाते थे, बट वहां जाके यूरोपियन लोगों ने उसे क्या बना दिया, स्पैगेटी, क्या ही है। फिर जो अरब ट्रेडर्स जब यूरोप जाते थे 15th सेंचुरी के आसपास तो वो पास्ता पिज्जा पास्ता पिज्जा पास्ता आई डोंट नो क्या है ये, जिस इंसान का दिन भी मैगी से होता है और रात भी मैगी से ही खत्म होता है उसे ऐसी चीजों के बारे में कैसे ही पता होगा भाई, जो भी है ठीक है। तो वो उस समय जो इटली का एक शहर है सिसिली, आई होप तुमने यूनिफिकेशन ऑफ इटली के बारे में पढ़ा हो, तो वहां में 7 किंगडम्स था उसमें हम पढ़ने लगा दो। टेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, ग्लोबल वर्ल्ड यानी कि ऐसा वर्ल्ड जो कनेक्टेड हो। ये चैप्टर काफी इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये चैप्टर बिल्कुल पहले समय की बात करता है जब ये वर्ल्ड कनेक्टेड है। जो हम आज देखते हैं कि कंट्रीज हैं, यूएसए है, रशिया है, जर्मनी है, इंडिया है, चाइना है, ये सब कनेक्टेड है ना। कोई कुछ इंपोर्ट करता है, कोई कुछ एक्सपोर्ट करता है, रिलेशंस है हमारे। बट ये उस टाइम की बात करेगा जब कुछ रिलेशंस नहीं थे, फिर कैसे इन कंट्रीज में कनेक्शन आया, कैसे रिलेशंस बने, और फिर जहां रिलेशन आता है वहां लड़ाइयां भी होती है। तो क्या रूट्स, ये मत सोच लेना कि ये रूट्स यानी कि ये रास्ते हैं और सिल्क यानी कि सिल्क तो सिर्फ सिल्क जाएगा इन रास्ते से, नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ नाम है सिल्क रूट्स, और सिल्क रूट्स के बारे में क्वेश्चन आता है तो वहां पे 3 पॉइंट्स इनको याद करने के लिए एक निमोनिक छोटा सा, देखो यार निमोनिक CPM है, CM होता है और एक PM होता है, थोड़ा सा कॉम्बो बना दो CPM। C से क्रिश्चियन एरा, इससे क्या रखना है, ये जो रूट्स थी ना ये क्रिश्चियन एरा के पहले से थी और 15th सेंचुरी तक थी। The roots have existed since before the Christian era and thrived almost till the 15th century. Then T से याद रखना है कि यहाँ पे पॉटरी भी ट्रेवल करती थी। चाइनीज पॉटरी ऑल्सो ट्रेवल द सेम रूट, उसी रूट पे चाइनीज पॉटरी भी जाती थी और उसी रूट पे इंडिया से स्पाइसेस यानी कि मसाले और टेक्सटाइल्स भी गिरते थे, यूरोप के साइड जाते थे। यानी कि उसी एक रूट पे चाइनीज पॉटरी भी जा रही है, आ रही है, उसी से टेक्सटाइल्स और स्पाइसेस भी आ रहे हैं। तो वो रूट कौन सी थी, सिल्क रूट। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा पॉइंट रहेगा CPM में M से याद रखो मेटल्स। तो अब जब कुछ जा रहा है तो उधर साइड से कुछ आएगा भी, तो इन रिटर्न प्रीशियस मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर फ्लोड फ्रॉम यूरोप टू एशिया।
एशिया से मसाले टेक्सटाइल जा रहे थे, तो एशिया में प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड और सिल्वर आ रहे थे। ये 3 पॉइंट है इसके बारे में। सिल्क रूट्स के बारे में याद रखना है, सिल्क रूट्स ऐसी रूट्स बिल्कुल भी नहीं थी जहां पर सिर्फ सिल्क ट्रेवल करे, बल्कि सब कुछ ट्रेवल कर रहा था। और सिल्क रूट्स इंपॉर्टेंस दिखाता है चाइनीज सिल्क की, क्योंकि चाइनीज सिल्क सबसे ज्यादा ट्रैवल होता था इधर से उधर, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया था, सिल्क रूट। अब जो ये रूट्स थी, इस पे जब इतना कुछ ट्रैवल कर ही रहा था, तो फूड भी ट्रैवल करेगा। अब फूड जब ट्रैवल हुआ, उसका सबसे अच्छा 2 एग्जांपल हमारे बुक में। सबसे पहला है नूडल्स। जब नूडल्स ट्रैवल होता है, कहां से नूडल जाता है, वेस्ट से, यानी कि वेस्टर्न वर्ल्ड से चाइना की तरफ, ईस्टर्न वर्ल्ड में, तो वहां पर उसको बोलते हैं स्पैगेटी। और उसी तरीके से लोगों का मानना था कि अरब के जो ट्रेडर्स थे ना, अरब के ट्रेडर्स पास्ता लेके जाते हैं इटली में, कब, 5th सेंचुरी में। और इंडिया और जापान में भी ऐसे ही सेम फूड्स थे, बस अलग अलग नाम से थे। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसे फूड एग्जिस्ट कर रहे थे, लोग ट्रैवल कर रहे हैं, अपना फूड एक्सचेंज करेंगे, नया फूड इंट्रोड्यूस करेंगे और वहां का नया फूड एक्सेप्ट करेंगे। इस तरह से पूरे वर्ल्ड में वो फूड अलग अलग नाम से थे, तो इसलिए लोगों में अब भी कंफ्यूजन थी कि कहां पर इनका बेसिक ओरिजिन था। जो सिल्क रोड पढ़ा, उस पर एक इमेज तुम्हारे एनसीईआरटी में रखी है। हम आगे एंड में चैप्टर के सारे इमेज बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे, तो अभी उसकी चिंता मत करो। फिर आ जाओ नीचे। फूड डिस्कवर हो रहा था उस टाइम पे, उस टाइम बिल्कुल वर्ल्ड नया था, काफी पुरानी बात हो रही है, सोचो 5th सेंचुरी तक हम पहुंच चुके हैं। अब उस टाइम पर जब लोग एक जगह पर रिसोर्स पाते थे कि यहाँ पर ये पाया जाता है, वहां पर वो पाया जाता है, तो बस फिर बकरी के तरह माइग्रेशन शुरू, लोग इधर उधर भागने लगते थे कि अरे वाह, वहां पे रिसोर्स ज्यादा है, तो चलो वहीं चलते हैं। इसी तरह से क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक कॉन्टिनेंट ढूंढा, अमेरिका नाम का। अब ये अमेरिका में क्या क्या इंक्लूडेड था, जो आज हम बोलते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, कैरेबियन आइलैंड, ये सब मिला कुछ टाइम पे बोला गया था अमेरिका। इसको ढूंढा इसने क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अब बस ढूंढते ही लोगों को मालूम पड़ प्रोसेस है, तो लोग वहां पर चालू कर देते हैं। और फिर 1849 में एक ऐसी चीज दिखाता है जो फूड की पर लोग कितना डिपेंड रहते हैं वो दिखाता है। एग्जांपल है, आयरलैंड में यार जो गरीब किसान थे ना, वो काफी डिपेंड हो गए थे किस पे, पोटैटोस पे, आलू पे। यार आलू कितना वहां पर आयरलैंड में सबको पसंद था, वो सब लोगों के पास एक्सेसिबल भी था। बट ये यार देखो, सिर्फ इंसानों में जो डिजीज लगती नहीं, प्लांट्स में भी डिजीज लगती है ना, जो क्रॉप खराब कर देती है। जब पोटैटोस में डिजीज लग जाता है, इमीडिएटली 40 पे लाखों लोग की जान चली जाती है, सिर्फ और सिर्फ स्टार्मरी की वजह से, क्योंकि उन्हें उनका फेवरेट आलू। और ये एनसीईआरटी की इमेज तुम्हें दिखा रही है क्या, द ईरिश पोटैटो फेमाइन 1849। अगर इमेज देखकर पूछता है कि क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो मार्क करना है ईरिश, ईरिश आयरलैंड। Famine, Irish famine. So they are just digging deep to find at least one potato to survive. So this is there in the picture based, is you have to identify. पोटैटो फेमाइन यानी कि भूखमरी, जो वहां पर ऐसा 1849। तुमने देखा कि सिल्क रूट्स पे काफी कुछ कर रहा है, तो मेटल्स हो फिर फूड हो, तो लोग फूड कर रहा है। तो लोग जब ट्रैवल कर रहे हैं, हमने देखा कि फूड में डिजीज हो सकती है, तो इंसानों में भी तो डिजीज होती है। अगर लेट्स सपोज किसी इंसान को, इंडिया मान लेते हैं हम, जयपुर में अस्थमा, वो अगर इंडिया में या कोई भी और बीमारी जो से है वो रहेगी ना। उसी तरह से बीमारियां भी ट्रैवल कर रही थी, और बीमारी काफी बड़ा रोल प्ले करती है किसमें, कॉन्क्वेस्ट में, जीतने में। क्या जीतने में, पूरा का पूरा लैंड जीतने में। कैसे, इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा। और सबसे अच्छा है पोर्टुगीज और स्पेनिश लोगों का। ये पोर्टुगीज और स्पेनिश लोग थे ना, ये जब अमेरिका जाते हैं, वहां के लोगों पर अपना कब्जा करना चाहते हैं, वहां के लोगों पर जीतना चाहते हैं कि ये सब मेरे गुलाम बन जाएं, तो वहां पर उन्हें कोई बहुत बड़ा फायर पावर आर्म्स की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर कोई बहुत बड़ी सेना की जरूरत नहीं पड़ी। सिर्फ एक छोटी सी बीमारी, कौन सी बीमारी, स्मॉल पॉक्स, जो आज छोटी सी बीमारी है स्मॉल पॉक्स, कि हम चलते हैं जाकर वहां पर वैक्सीन ले लेते हैं और ठीक रहते हैं। उस टाइम पे वैक्सीन डेवलप नहीं हुई थी, अमेरिका एक बहुत नया सा कॉन्टिनेंट था, तो वो वहां पर जब जाते हैं पोर्टुगीज स्पेनिश लोग, तो वहां पर स्मॉल पॉक्स स्प्रेड होता है। और जो नए लोग थे, जो
अमेरिका के लोग हैं वो नए लोग हैं, वो बिल्कुल भी इम्यूनाइज्ड नहीं है, उनके पास कोई भी अपने इम्यूनाइजेशन नहीं है स्मॉल पॉक्स के खिलाफ, तो उन्हें स्मॉल पॉक्स लगते ही काफी भारी मात्रा में लोग वहां पर मर जाते हैं। और ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें स्पेनिश और पोर्टुगीज की विन में, वहां पर कैप्चर करने में। क्योंकि ये जो स्पेनिश और पोर्टुगीज लोग थे ये तो पुराने थे, इनके पास इम्यूनाइजेशन था, इनकी बॉडी रेडी थी स्मॉल पॉक्स के लिए, बट अमेरिका के लोग बिल्कुल नहीं थे, वहां पर स्मॉल पॉक्स का कोई भी इम्यूनाइजेशन नहीं था, और इसको ही नाम दिया गया बायोलॉजिकल वारफेयर, यानी कि जो युद्ध लड़ा गया वो बायोलॉजिकल मीन से लड़ा गया, जो कि था स्मॉल पॉक्स के जर्म्स। और कई लोग अब भागने लगे, जैसे मैंने बताया कि जहां पर भी अच्छी चीजें मिलती थी, रिसोर्सेस मिलते थे, लोग वहां पर भागने लगते थे। उसी तरीके से एक सिटी के सर्च में निकल गए, अफवाह उड़ी थी कि एक सिटी है एल्डोराडो जहां पर काफी सारा गोल्ड है, तो वहां पर सबके सब भाग जाते हैं। तुम्हें कभी दिमाग में है, तुम्हें बस इतना रखना है कि इससे एमसीक्यू हो सकता है कि विच सिटी वाज द फेवर्ड सिटी ऑफ गोल्ड, एल्डोराडो। आगे बढ़ते हैं। जैसा हमने देखा कि अब लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो लोग वहां पर कैप्चर करना चाह रहे हैं, कब्जा करना चाह रहे हैं। पोर्टुगीज और स्पेनिश लोगों ने कब्जा कैसे किया? स्मॉल पॉक्स का यूज करके, क्योंकि स्मॉल पॉक्स उनके पास तो थी इम्यूनाइजेशन, उनकी बॉडी तो लड़ सकती, बट अमेरिका में बिल्कुल नहीं आता, तो वहां पर लोग आसानी से मर गए। अब उस टाइम पर जब कैप्चर करना है तो उन्हें चाहिए लोग, अपनी एक सेना चाहिए, अपने लिए नौकर चाहिए, स्लेव्स चाहिए, स्लेव्स। तो उस टाइम पे स्लेव्स को लोग खरीदते थे और बेचते भी थे। ये एक इमेज दिखा रही है स्लेव्स की सेल लगी हुई है, जहां पर स्लेव्स खरीदे जा रहे हैं। चाइना और इंडिया वर्ल्ड की रिचेस्ट कंट्री थी 18th सेंचुरी तक, बट फिर हुआ कुछ ऐसा कि चाइना ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया और इंडिया पर ब्रिटिश का कब्जा बढ़ता गया, जिसकी वजह से चाइना का आइसोलेशन और ब्रिटिशर्स का कब्जा इंडिया पे, ये दोनों वजह से क्या होता है कि लोगों का शिफ्ट किधर चला गया? अमेरिका की तरफ, क्योंकि अमेरिका तो वैसे ही इतना ज्यादा प्रॉस्परस था, इतने रिसोर्सेस और मिनरल्स थे कि लोग इंप्रेस थे। तो इस वजह से जो वर्ल्ड ट्रेड था, लोगों का इंटरेस्ट था, वो किधर चला गया? अमेरिका की तरफ। अब हम आ गए टॉपिक 2 पे। Yummy nutritious snack with vitamins, fiber and vitamins. Go grab one for your little one. नया Super Late Lip Color midway through your cute day. Instant shine color that lasts up to 16 hours. No smudge, no transfer. Color lock formula. Just shake, swipe, go. Late Lip Color midway through your cute day. 18th सेंचुरी, यहाँ पे काफी लंबा पीरियड की बात करेंगे हम, 1815 से 1914 तक, एक पूरी सेंचुरी 19th सेंचुरी की बात करेंगे। अब यहाँ पर वर्ल्ड काफी तेजी से चेंज, क्योंकि लोगों ने माइग्रेट करना सीख लिया था। होता क्या है, फ्लो होते हैं तीन फ्लोस, फ्लो ऑफ ट्रेड, फ्लो ऑफ लेबर और फ्लो ऑफ कैपिटल फॉर शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स। Yes. Yes. I have to know which just take the रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी ने कैसा रोल प्ले किया? अभी मैंने बताया कि वहां पर जब कॉर्न लॉ हट गया तो इंपोर्ट में लग गया, तो इंपोर्ट में क्या चाहिए? रेलवे चाहिए, अच्छी स्टीम शिप्स चाहिए, अच्छी शिप्स चाहिए, जिससे सब कुछ इधर उधर ट्रैवल हो सके। और यहाँ रोल ऑफ टेक्नोलॉजी में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है मीट का, कि जो मीट होता है ना, वो सिर्फ खाने के लिए, टेस्ट के लिए नॉनवेज नहीं था उस टाइम पे। उस टाइम पे मीट का ट्रेड हो रहा था, बाइंग सेलिंग चल रही थी, जिसमें काफी प्रॉफिट। वो प्रॉफिट कैसे, सच में ज्यादा प्रॉफिट नहीं दे पा रहा था उसके ट्रैवल की वजह से, क्योंकि मीट ट्रैवल करना है उस industrialization का introduction industrialization just 10 minutes, 11 minutes. हेलो हेलो दोस्तों, तो आज हमें शुरू करना है नेक्स्ट
नमन तेरी आवाज बाबा बंगाली कारा बनेगा तेरे पे चल मैं बोल लगा मैम 10 मिनट है आज हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेटर्स को कार्य और आज मैंने बात की नेशनलाइजेशन बच्चों से करके चैप्टर की के साथ वैलिडिटी की बात करें तो ये शीट एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे अपने क्लास में हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ते हैं और इस चैप्टर को मैंने कहीं वीडियो लेक्चर के बहुत ही कम समय में कंप्लीट कर दी एट द प्रीवियस से क्वेश्चन वीडियो में निकालने वाले तो पूरी वीडियो देखने के बाद बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पूरी तरीके से रिप्रेजेंट इसके अंदर हम इसका करेंगे हर चीज को मैंने इस पेंटिंग में एंगल ऑफ सोवियत की है या इसके एक हाथ में न्यू सेंचुरी का दिखता है चित्रकार ने ऐसा दिखाने की कोशिश की है जुलाई सेंचुरी आने वाले इसमें सारी चीजें मैकेनाइज्ड हो रहे हैं इसकी दूसरी पेंटिंग कुछ ऐसी ही है दरअसल इसके दो हिस्से अपर साइड ऑफ क्वेश्चन में दिखाया गया है जो कि अभी तुरंत जारी कर यूज करके नए मॉडल और वीडियो बना रहा है और हमें दूसरी तरफ देखते हैं इसमें मैं रसमी का यूज करके बहुत बड़ी बिल्डिंग ब्रिजेस ये सारी चीजें बना रहा है ये सारी चीजें देखने का आपके मन में कुछ सवाल आते हैं जैसे नेशनलाइजेशन क्या होता है क्या होता है नेशनलाइजेशन एक सारी चीजें बदल जाती है जब ये लोगों के लिए बुरा साबित हुआ तो शुरुआत से स्टार्ट करते हैं जब ऐसे मतलब जो फैक्ट्री से हुआ करते हैं लेकिन अभी तरह से मार्केट के लिए प्रोडक्शन के बाद और ये मास प्रोडक्शन शहरों में नहीं गांव में यानी कि स्पेशल चीजें आगे सारी चीजें प्रोड्यूस करने के लिए अपने फैमिली को प्रोडक्शन नहीं हुआ ऐसा इसलिए था इस समय यूरोप में गिर गया यानी मध्य इनके पास मोनोपोली राइट्स उस समय इन मध्य ऐसे विशेष अधिकार दिए गए जिससे इलेक्शन को कंट्रोल करता है और साथ में ऑब्जर्वेशन में भी आने का मौका नहीं देते थे इस सारी चीजों की वजह से स्मॉल मर्चेंट्स कंट्री साइड के मूव करने लगे इस समय पीजेंट्स की लेकिन जब इंटरनेशनल मार्केट में गए और इस पीरियड को प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं कमिंग अप ऑफ इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 में फैक्ट्री है इसके बाद धीरे-धीरे इसके नंबर भी बढ़ने लगे ऐसा इसलिए था कि 18वीं सेंचुरी में बहुत सारे इन्वेंशन हुए इससे मैन्युफैक्चरिंग की हर स्टेप को बहुत जल्दी और एफिशिएंट वे में किया जाने लगा नई टेक्नोलॉजी आने के कारण स्ट्रॉन्ग थ्रेड और यार्न प्रोड्यूस किए जाने लगे और इसी समय रिचर्ड आर्कराइट ने हॉटेल मिल का इन्वेंशन कर दिया जिससे प्रोडक्शन की सारी प्रॉफिट एक ही छत के नीचे हुए बहुत सारे वर्कर्स एक ही जगह पर आकर प्रोडक्शन करने लगे करने के लिए एक सुपरवाइजर भी रखा जाने लगा जिससे गुड की क्वालिटी इंप्रूव हुई और प्लेस को फैक्ट्री के नाम से जाना लगा बेस ऑफ इंडस्ट्री इसमें हम देखने वाले हैं कि जब शुरुआत में फैक्ट्री आई तो बड़ा सारी चीजें इंडस्ट्रीज में बनना शुरू हो गई थी या फिर कुछ काम अभी भी हाउस होल्ड में होता था इंग्लैंड में सबसे पहले कॉटन की इंडस्ट्री लगाई गई इसकी वजह से 1840 तक इंग्लैंड की इकोनॉमी का ये सबसे बड़ा सेक्टर था लेकिन 1840 के बाद मेटल की डिमांड बढ़ने लगी क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में इम्प्रूव होने लगा था इसकी वजह से मेटल इंडस्ट्री इंग्लैंड की इकोनॉमी का इतना प्रोडक्शन होने के बाद 19वीं सेंचुरी के सिर्फ 20% से भी कम वर्कफोर्स इंडस्ट्रीज की बात करते हैं मैंने किया नहीं आज इस कारण इंग्लैंड में आपको नहीं बिकता अगर आप हैंड लेवल पे स्टीम पावर एक चीज को कुछ करने का मौका मिले तो आप क्या करोगे ऑफ कोर्स स्टीम पावर और क्या स्पेशली स्टीम पावर की चीज क्या ये जानने की स्पीड लेकिन इसके बाद में इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देगा हम जिसके लिए हम इन समय में नहीं देंगे या फिर इसको देंगे और साथ ही साथ ना वो साइड वीडियो लाइन ना बात करें हम इस समय की लेकिन जब इसको बेचने की कोशिश इस कारण इंग्लैंड में आप सबके नहीं बिकता अगर आप हैंड लेवल का स्टीम और एक चीज को रेट करना
Of course, स्टील पर स्टील पर कोई अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट ठंडे का डिस्क्रिप्शन और इन सभी में लिंक देंगे या कुछ लिंक देंगे साथ शेयर करना है उनको साइट और इसमें जो लाइक बात कर रहा हूँ उस समय की सर इंडियन पॉपुलेशन लेबर शॉर्टेज इस वजह से लेबर को दो भी क्योंकि मशीन की कॉस्ट बहुत ज्यादा थी इंडस्ट्री की डिमांड कौन सा वाली समय पटाखे की इंडस्ट्री पटाखे की इस वजह से इसी इंडस्ट्री मशीन को खरीदने में इतनी महंगी मशीन का साल भर इस्तेमाल नहीं इसी कारण ये भी था कि जो मशीन को सब मशीन को ज्यादा नहीं एक महीने और इस वजह से हमें गुड पर वही अमेरिका जैसी कंट्रीज वहाँ मशीन बदलाव करने से लाइक आउट करते हैं का मतलब जाना की हालत की अवस्था लोग काम की तलाश में आगे तो थे पर काम से बिल्कुल नहीं पाता था इनकी अच्छी और दूसरे वर्कर्स लंबे समय तक काम करते थे वर्कर सैलरी बहुत इस वजह से 19 से पर से 19 उसके बाद 1990 के आसपास टेक्नोलॉजिकल चेंजेस और नई नई चीजें होने लगी जिस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट 35 से 75% बढ़ गया एक मशीन 5 से 10 किलो का काम अकेले करती है इक्वली रिवर्स ने टेक्नोलॉजी को पुश करना शुरू कर दिया लेकिन 1840 के आसपास सिटी में बिल्डिंग बनना शुरू हो गई और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इंप्रूव हुए जिससे अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने की एक राह ढूंढने के सामने आ गई Delicious, crispy fingers. Chocolate tear, break, snap. Have a break, have a Kit Kat. Nivea Aloe Hydration, आपकी gorgeous skin का राज. Summer tested, backless tested, love tested. इसमें है 100% natural aloe vera extract और hydrating serum. बिना चिपचिप के, जो दे hydrated and healthy looking skin. Skin is for being summer ready. Nivea is for skin. इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं कि ब्रिटेन में इंडियन कंट्री को कॉलोनाइज करने और ऑफ कोर्स इसमें इंडियन को पर्सपेक्टिव से चीजों को समझने वाले और बेसिकली इंडियन टेक्नोलॉजी को दुनिया में स्टफ शेयर करेंगे मशीन आने के पहले इंडिया के कॉटन क्लॉथ की फाइन क्वालिटी की कारट इसकी वर्ल्ड में भारी डिमांड थी इसके लिए सूरत से वेस्टर्न वर्ल्ड में और दिल्ली से साउथ ईस्ट वर्ल्ड को चीजें ट्रांसपोर्ट की जाती थी और इस पूरे नेटवर्क में इंडियन मर्चेंट का सबसे बड़ा रोल है मर्चेंट इंडिया के अंदर वीवर्स को कपड़ा दे देते थे उनसे कपड़े में जाकर ट्रेड कर देते थे लेकिन इस बार ये नेटवर्क ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है कंपनी लोकल नवाबों से परमिशन लेकर इंडिया में ट्रेड करना शुरू कर दिया था और अब यूरोपियंस मुंबई और कोलकाता जैसे पोर्ट से इंडियन टेक्सटाइल को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया क्लाइंट मीटिंग चले गए व्हाट हैपेंड टू वीवर्स जब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पॉलिटिकल पॉलिसी तब इंडियन गुड्स की ज्यादा डिमांड होने के कारण और ब्रिटेन में कॉटन इंडस्ट्री न होने के कारण इंडियन टेक्सटाइल को खरीदने के लिए कंपटीशन होता था जिस वजह से वीवर्स को कपड़े के अच्छे दाम मिल जाते थे लेकिन जब ईस्ट इंडिया
Okay, sci-fi is but study and sleep, power sharing, 15 out of 15 you have to do it. All of you, study and sleep. And my core video